Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, welcome to another insightful session organized by the ICESCO Chair of Data Science and Analytics for Business in collaboration with Machine Vision and Intelligent Systems Lab at NUST SEECS. Today, we are honored to host a distinguished professional whose expertise has been instrumental in the realms of IT, telecom management, and entrepreneurship. In today's dynamic and ever-changing business environment, the role of innovative entrepreneurship cannot be overstated. We are privileged to have Sir Maajid Maqbool with us, an experienced professional, strategic plans consultant, and startup advisor, who will shed light on the transformative power of entrepreneurship in shaping job opportunities and steering business development. Sir Maqbool has been a driving force in the IT and telecom sectors, accumulating a wealth of knowledge and experience over nearly 3 decades. His experience spans operation management, strategic planning, marketing, and project coordination. Notably, he stands at the forefront of academia, passionately working to bridge the gap between education and industry, nurturing and guiding the leaders of tomorrow. Today's talk, Innovative Entrepreneurship, a catalyst for job opportunities and business development, promises to uncover the crucial elements that drive job growth and foster the expansion of businesses in our rapidly evolving market landscape. Sir Maqbool's insights, drawn from his extensive professional journey, are bound to inspire and enlighten us about the pivotal role of entrepreneurship in driving economic growth and creating sustainable job opportunities. As we embark on this enlightening discourse, I urge you all to join me in welcoming Sir Maajid Maqbool. Let's embrace this opportunity to delve deeper into the world of entrepreneurship and its profound impact on job creation and business development. So, a round of applause for Sir Maajid Maqbool. Any entrepreneurs here? Okay. Since I teach entrepreneurship also, I'm a firm believer. आवाज आ रही है उधर? सर वो ऐसा कहते कि आप ओपन नहीं हो रहे हैं, आवाज बाहर से बात नहीं कर सकते। अच्छा जी। वैसे मैं यही बोलता रहा। पहले वो सर हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया ताकि इंटरनेट पे भी I'm a firm believer that if you have to build a building, the foundation should be absolutely the best. ठीक है? इसलिए अगर if not delved into entrepreneurship या अगर आपने कोर्स नहीं लिया हुआ पहले, तो I feel it necessary कि मैं entrepreneurship के basics पे जरूर जाऊँ. So I'm going to get into some basics of entrepreneurship क्योंकि यही बुनियाद है जिसके ऊपर आप इमारत खड़े करते हैं. So we'll start with that and then we'll go on to the meaning of innovation. So Bismillah. और आज का ये एजेंडा है, थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत के बारे में बताएंगे, so that you can also consider this as an option in your life, okay, whether you're working nowadays or not. And then types of innovative entrepreneurship, and lastly I will talk about SEECS entrepreneurs, because you're all now part of SEECS, no matter where you get your license from. You have an option of becoming SEECS entrepreneur, and I'm going to give you a few stories of SEECS entrepreneurs who have mashallah done very well over the last few years. Okay, my first slide are these stats. Which business school do you think these stats belong to? Harvard. Look, these are staggering statistics, and they all belong to one institution. MIT.
Okay, they belong to, but let me just go through this. 30,000 active companies. 30,000, no joke. 4.6 million people employed in those companies. They make $1.9 trillion a year, which is the world's 11th largest economy. And it is all because of one institution. MIT. And that institution, yes, some of you have guessed it right, is MIT. Yeah. मसला ये है कि जब आप MIT का नाम सुनते हैं तो आपको कौन सी आपको स्किल सेट याद आता है? इंजीनियरिंग। तो आपको इंजीनियरिंग याद आता है जब आप MIT का नाम सुनते हैं। और MIT में सबसे जो मशहूर डिपार्टमेंट है वो WCS का है, and has been famous for the last 40 years. So हम MIT को टेक्नोलॉजी और टेक्निकल लोगों से एसोसिएट करते हैं, and yet everything that I have presented here to give MIT its credentials is linked with business. और जो बिजनेस स्कूल्स हैं जो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं वो ये सोचते हैं कि इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं वैसे लोग होते हैं, ये नाम एसोसिएट करते हैं, ये तस्वीरें एसोसिएट करते हैं उनके साथ, उनको ये कहते हैं, and then they think कि जी ये उनका ड्रेस सेंस है और जो लड़कियां उनकी हैं ये कीरिंग पहन के बड़ी खुश हो जाती हैं, ठीक है? The reality is far different. एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके क्रेडेंशियल सारे बिजनेस के हैं लेकिन हमारी एसोसिएशन उसके हमेशा टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के साथ। The reality of, look, this is the reality. 31% have filed patents, 34% consider themselves inventors. And since the 1990s, 8% have founded a company, or 70% companies have survived 10 plus years. We're talking about a technology school. And all of you are sitting in a technology school right now. All of you. अब आप ये स्टाइल देखिए, इनका 1990 में एक कोर्स ऑफर होता था एंटरप्रेन्योरशिप का, और 15 साल के बाद there are 60 entrepreneurship courses in MIT, and I'm not talking about boot camps. So, thus this is the other reality. ये सब कुछ होता है MIT Enterprise Forum के साथ, यहाँ entrepreneurs को train किया जाता है। By the way, we also have a very good infrastructure here. अगर देखा जाए पाकिस्तान के लैंडस्केप में NUST का सबसे अच्छा infrastructure है। And these are some of the companies co-founded or co-founded by MIT entrepreneurs, और इनमें से 3 कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तानियों की खोजी हैं। I will leave it to you to recognize them. Three of them. And FireEye. Skylectric, Skylectric and FireEye. तीसरी कौन सी है? FireEye. Sorry, FireEye, Skylectric and Khan Academy. Khan Academy is a Bangladesh. पाकिस्तानी होगा, ex-Pakistani. ठीक है? So you can find out the third one. And इनमें से 2 की तस्वीर तो मैं लगा भी दिया है।
You recognize them? Yeah. Asher Aziz. Asher and Umar sir. Yeah. Okay. So, क्योंकि मैंने कहा था base level पे, so how do you define an entrepreneur at the very base level? उनमें क्या चीज़ है जो actually आप में भी है, but you've never thought about becoming an entrepreneur? At the very base level, they have knowledge. They use their knowledge. That's all they do, and that's all you need to do. You use your knowledge. इसके पास knowledge ही ना हो वो create कैसे करेगा? मेरे एक मुलाजिम ने एक कहानी सुनाई कि उसके गांव में, जो कि पहाड़ी में था, पहली दफ़ा जब कार आई उसके गांव में, तो कार जब उन्होंने खड़ी की और लोग उसमें से निकले, तो गांव के एक बुजुर्ग ने उस गाड़ी के नीचे चारा डाल दिया कि भाई ये देखो कौन सा जानवर इनको लेके आया पहाड़ी पे, 4 लोगों को बहुत थका होगा तो मैं उसके नीचे चारा डाल दूँ. Why did he do that? He was humane because he had the right attitude, but he did not have the knowledge. Entrepreneurs are those who use knowledge at the very base level. And when you use knowledge, what do? You're actually creating value. ये बहुत बड़ी चीज़ है. Because we pay for value. हम हर चीज़ की वैल्यू के पीछे जाते हैं और हम उस वैल्यू के साथ एसोसिएट करते हैं पैसे को. And if something creates value for us, we part with our money. And when the more we part with our money, the more wealth is generated by the entrepreneurs. आपको मैं अगर इस कमरे में अगर थोड़ा सा लूँ ना एक सर्वे, तो मैं पता चलेगा कि भाई कम से कम आप लोगों को 5 किस्म की टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. क्यों करते हैं? बेसिक इंग्रेडिएंट तो फ्लोराइड है. Because with each one in your mind you associate a value and you pay for it. So once they generate wealth because of the value, they're actually serving society. Why? Because खानदानों के चूल्हे जला रहे हैं. Once you expand, you're actually a giving hand rather than a receiving hand. So at the very base level, please remember this. मैंने कहा ना इमारत बुनियाद के ऊपर खड़ी होती है, बुनियाद आप अपनी मजबूत कर लो. All of you have knowledge. All of you have relevant knowledge. All of you can build upon that knowledge. So that which serves creates value. And it's all about value creation. And for each value, we associate the cost with it. और आप जितनी भी definitions देख लें, entrepreneur का जो base लफ्ज़ है ना, वो 17th century में coin किया गया था. It's a French word और इसका मतलब है to undertake, not the undertaker of WWE. That's to undertake. Undertake means you're a go-between. And go-between again is very important for you to understand, because the entrepreneur is between your team, which has to produce the goods and services, and the market. So the entrepreneur is the person who undertakes responsibility on both sides. That's again very important for you to understand. That's why they go between. और करते करते over a period of time, जब एक base definition होती है तो लोग फिर उसके अंदर चीज़ें आगे ऐड करते रहते हैं. Risk taking, moderate risk taking वगैरह वगैरह. So उन सारों के अंदर common जो चीज़ें निकलती हैं ना, उसके अंदर एक creation, a founding or an origin. Now creativity, if you read about creativity, बहुत मुश्किल.
You create something new with a great deal of difficulty, and it's very, very difficult to be creative. So ज़्यादा जो focus होता है वो होता है इस पे. Innovation. Innovation is a new way of doing something. चीज़ वही है लेकिन आप एक नए तरीके से कर रहे हैं. You innovate so that people associate value with it. And this is my favorite example of innovation. मेरे मेज पे तो जगह ही नहीं होती, और अगर कोई चाय ले आए तो मुझे डर लगता है कि भाई चाय गिर गई तो मैं जो पेपर्स मार्क कर रहा हूँ वही ना खराब हो जाए और मुसीबत पड़ जाएगी. ठीक है. So someone came up with this brilliant idea. They innovated. उन्होंने एक क्लिप पकड़ा और क्लिप को ऐसा डिजाइन किया कि it became a cup holder also. To me, that's a classic example of innovation, a new way of doing something. और चूंकि मैंने वैल्यू की बात की थी, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ. अगर मैं आपको कहूँ, देखिए इसके अंदर प्लास्टिक है, मेरे ख्याल में को 15 रुपए का प्लास्टिक होगा, but it's the idea that counts. Now if I ask you कि ये 100 रुपए का है, 15 रुपए का प्लास्टिक है, मैन्युफैक्चरिंग के और साथ उतार करा के 100 रुपए का, I can guarantee every one of you will buy it. Not only that, आप में से कुछ कहेंगे 5 दे दो, 2-3 सालगिरहें आ रही हैं, ये दे देंगे. मैं किधर हारूंस जाके यूनिक चीज़ें ढूंढता फिरूं. ठीक है, ये मैं दे देता हूँ, ये दे देती हूँ. तो if I tell you कि ये 1000 रुपए का, you will begin to think, won't you? यार चलो देख लेते हैं. अब उसको चीज़ तो देनी है, ले आए, मिल रही है, पकड़ लो, दे दो यार, 1000 रुपये खैर ठीक है. It's worth it because it will bring delight to the people. But in most of the cases, you will say it is not worth 1,000 rupees. Am I right? Yes. Okay. Now, let's jack up the price a bit. What if I tell you that this is 4,000 rupees? आप सब कहेंगे कि जी अपने पास रखो. ठीक है? But if I tell you this is 4,000 rupees, it's made by Apple. आप में से कुछ लोग कहेंगे कि दे दो. ठीक है? And immediately आपके ज़हन में आएगा अगर एप्पल का बना हुआ है तो शायद ये ख़राब ना हो, इन्होंने बिल्कुल हाई ग्रेड प्लास्टिक इस्तेमाल किया होगा. नो, मतलब कोई इसके अंदर उन्होंने रियायत नहीं छोड़ी होगी क्वालिटी में. ठीक है. सो जो मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ एक इनोवेशन के पीछे, न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, आप देख लें कि हमारे ज़हन में 3 वैल्यूज आई हैं और इन तीनों के पीछे कोई ना कोई ज़रूर इसको खरीद लेगा. So the person, let's say, who sells it for 100 rupees, मैं अगर इसी क्लास को देख लूँ तो इस वक्त जितने लोग हैं ना, I will make more money by selling it for 100 rupees, even if I make 30 rupees per. Why? Because I am selling in volume. और एप्पल के अगर 3 ही बिक जाए, I might make the same amount of money. Okay? And that is what entrepreneurs need to think of while they are innovating. Then we have economic organization, we have risk. हर चीज में risk आता है.
Why? Because you're delving into the unknown. And especially when you innovate, you're doing something new, a new way of doing something. You don't know if it's going to catch on or not. And you also don't know who is going to like it and who is not going to like it. Uncertainty, risk and uncertainty. I don't want to go into the details of this answer, but I can have a discussion on it later on because ये मुतज़ाद चीज़ें हैं, uncertainty के आगे confidence लिखा है, ठीक है? So let's just leave it at that, and then we have entrepreneurial behavior, strategic thinking, and risk-taking behavior. So if you were to describe entrepreneurship, इसकी एक ही definition बनती है. You can go to the net and you can find 20 others. और जो आपको पसंद आ जाए वो ले लें. Because knowledge is not my domain, it is everybody's domain. You just build up upon it. Knowledge आपके पास होनी चाहिए. So startup, ये जो है ना, ये एरिक रीस इसकी किताब आजकल बहुत पढ़ी जा रही है, The Lean Startup. And he is saying startup, क्योंकि ये buzzword है आजकल. How many startups is a human institution designed to create under conditions of extreme uncertainty. और इस extreme uncertainty के अंदर एक और definition आ गई है कि entrepreneur कौन है? Someone who jumps from a plane without a parachute. Okay? So risk और uncertainty अपने उरूज पे होती है जब आप ये काम. And why has it become so important? Because it is a major contributor to global economic growth. Major contributor. और इस वक्त academic inflation भी अपने उरूज पे है. पहले आपको मेरे ज़माने में जब हमें डिग्री मिल जाती थी बैचलर्स की, तो हमें नौकरी की जल्दी नहीं होती थी, क्योंकि डिग्री थी इसलिए नौकरी मिल जाएगी. एक साल को सैर कर लेते हैं दुनिया. No longer. I've heard in India एक नायब कासिल की पोस्ट के लिए PhD ने अप्लाई किया. Okay, that's academic inflation. So we need entrepreneurship, and we need entrepreneurship because you must also think of self-employment as a career. So why teach? To train people who can innovate, create, invent. सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, पर्सनल क्वालिटी है. आप में क्या क्वालिटी है एटीट्यूड वाइज कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकें? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. हर चीज़ के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: नॉलेज, स्किल्स एंड फाइनली एप्टीट्यूड. Universities are great at giving you knowledge and teaching you skills even. It is the third part that is lacking. मैं आपको एंड में जो सीख के एंटरप्रेन्योर्स की कहानियाँ सुनाऊंगा, उनके तीनों के फ़र्क एटीट्यूड हैं. I'll explain. उन्होंने उसको या उस फिलॉसफी को अपना बेसिस बनाया. So the answer will always be personal. Please remember, always be. But the opportunities are global. You just have to be innovative in your mind. So अब जब हम innovation की बात करते हैं, तो ये एक मैंने जो definition दे दिया है, I'm stuck with it. New way of doing something. It's the easiest way to explain. आप इसकी formal लंबी definition भी पढ़ लें. So improvement होती है या disruption होती है या नई solution बना लेते हैं. but सारी आपकी thinking, observation और market demand के पीछे होती है. So
What are the 8 sources of innovative entrepreneurship? सबसे पहले market needs and trends. जो market demand करती है उसकी वजह से आप innovate करते हैं. अगर market ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई बहुत आलूदगी हो गई है carbon emissions की वजह से, a need has been created and therefore we now have hybrids and electrical vehicles coming up. To the extent कि जिस तरह Edison bulb is now extinct virtually, इसी तरह आपका जो ये engine है 4 stroke का ये भी 2050 के बाद almost extinct हो जाएगा. Why? Because the new market need has been created and new trends have been created, and that is the source of innovation. क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था कि एक शख्स ने the key is, I have an old Honda Civic which I love to drive because it's a great car. है वो 2020 की. मेरे दिमाग में बात खुशी हुई है कि मैं उसको इसी तरह इलेक्ट्रिक कार में चेंज कर दूँ. किट्स नहीं मिलते, और अगर किट मिलती है तो उनको मेजर चेंजेस करने पड़ते हैं. You know how one person is innovating? For the electrical engineers, उसने सारा जो है गाड़ी के पहियों में लगा दिया. Is experimenting with putting everything in the wheels. You don't do anything to the car. Everything goes into the wheels और आप डिग्गी में बैटरी रख दें. क्योंकि लोग इसको कोई सोच रहे हैं ड्राइव चेन के साथ क्या करेंगे तो फलाने के साथ क्या करेंगे. He's trying to bypass. That's innovation. Second, technological advancements. Now technological advancements जो हैं वो क्यों ज़रूरी होती हैं? आप मुझे बताएं कि उबर, करीम, Alibaba, they are not possible that these technologies not people. आपको आइडिया भी ना आता. आपको अगर आज से कोई इवन 50 साल पहले somebody had said कि जी I am going to create the world's biggest product company and I am not going to own a product, you would have been laughed at. But because of technologies such as the internet and Google etc., these innovative ideas are possible. So technological advancements, or even before the turn of the century, superconductors की बात होती थी. कॉन्सेप्ट था सुपर कंडक्टर्स का, बट जिस दिन अनाउंस किया कि जी हमने सुपर कंडक्टर बना लिया है, उसके बाद ऑल हेल ब्रोक लूज. और अब आपकी ट्रेन जो हैं वो 600 किलोमीटर तक टेस्ट हो रही हैं. वाई? बिकॉज सुपर कंडक्टर्स आर नाउ अ रियलिटी. दे वर ओनली अ थ्योरी बिफोर. एंड दैट्स हाउ यू इनोवेट. Just have to keep your eyes open. Customer feedback and insights. Airbnb, हालांकि Airbnb ने exactly वो ऊपर की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, लेकिन उसकी डिमांड किस तरह आई थी? डिमांड इस तरह आई थी कि लोगों ने कहना शुरू किया, भाई why can't we go to a place and find a great spot or go to the middle of the city and use somebody else's room and pay them. And these technologies, since they were available, they created Airbnb. और इसको ही कहते हैं disruptive. सुना है ना नाम के जी disruptive technology, या वो disrupt कर देते हैं पूरी इंडस्ट्रीज को. उन्होंने disrupt कर दिया. आपकी गाड़ियाँ डिसरप्ट हो गई हैं. एलईडीज ने आपके बल्ब को डिसरप्ट कर दिया. एयरबीएनबी ने आपकी होटलिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया.
then you have problems that you need to solve. Don't ask me how it works, लेकिन वैक्यूम क्लीनर का सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि उसके अंदर एक थैला भरा होता है that nobody wants to touch. And Dyson comes up with a no bag vacuum cleaner. So they solved the problem. And if they solved the problem, they've got it made. Next, changes in regulations or policies. आपकी जो environment है ना, आपकी दुनिया की environment, मैं उस घड़ी को देख रहा हूँ, मैंने उस घड़ी को अभी तक नहीं देखा और मैं अपनी घड़ी देख रहा हूँ. Okay, I have an eye on the time. आपकी रेगुलेशन जब चेंज हो जाती हैं और आपके सोलर पैनल्स जो हैं उन पे अगर आप टैक्सेस लोअर कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो इट गिव्स यू मोर इंसेंटिव टू इनोवेट. सो द गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी बिग पार्ट. याद रखें, आपकी ज़िंदगी में भी और आपकी बिजनेस लाइफ में भी there will always be three circles. One, at a personal level, one is you yourself, where you feel you have control. Then is your social circle, which has an influence on you. And then the third is the outer circle. ठीक है? So outer circle सब पे influence करता है as a society. इसी तरह जब entrepreneurship में आपकी कंपनी होती है सेंटर में, and then you have your industry, because that industry influences you. And then you have the outer circle. And for societies, the outer circle is the most important. Because आप अगर entrepreneurship में भी जाएंगे, the outer circle is your most important partner. The outer circle is where the roads are made. मैं आपको मिसाल देता हूँ. अगर आप जापान में, if I am selling something and if I have to deliver to my customer at 2 p.m. in the afternoon, तो मैं उनको फ़ोन करूँ कि जी don't worry, I'm going to put your package on the 7 a.m. bullet train and it's going to reach 600 kilometers ahead in 4 hours. 11 साढ़े 11 बज जाएंगे और आपको 2 बजे सामान मिल जाएगा. आप में से कोई इसको डिनाई कर सकता है कि नहीं होगा? It's going to happen. Now let me give you another. If the same thing happens here, and I have to deliver the goods outside Lahore, तो मैं अगर उनको कहूँ फिक्र ही ना करेंगी, सुबह 7:30 बजे तेज़गाम चलती है, मैं उसके वो चढ़ा दूंगा, तेज़गाम 11:30 लाहौर पहुँच जाएगी और आपके पास माल 2 बजे होगा. I started seeing people smiling. Why? Because you don't believe me. Because we don't trust the outer infrastructure. That is how important it is in your lives and in the lives of entrepreneurs. कुछ भी कर ले, we have to rely on it. आप लोगों को ये फायदा है, especially those in the computer science realm. हमारा outer जो circle है ना, जिसके अंदर इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, it is still very robust. आप सोचें अगर इंटरनेट की लोड शेडिंग शुरू हो जाए, क्या करेंगे आप? So we are very fortunate. Secondly, we are very fortunate because the goods that we deliver are intellectual goods. Very important. Okay, collaboration and networking. Mercedes and Swatch people got together to design. One made good cars, the other made beautiful designs. And they came up with the smart car. That's another source of innovative and global trends and cultural shifts.